ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी, आज हम स्ट्रेट लाइंस पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइंस हम पहले देखेंगे कि स्लोप कैसे निकालते हैं और स्लोप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे रेशियो वाले क्वेश्चन जो हम बहुत फ्रीक्वेंटली देखते हैं वो कैसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लाइंस के स्लोप्स के बारे में देखेंगे कि लाइंस परपेंडिकुलर कैसे होती हैं और लाइंस के स्लोप्स के रिलेशन बीच रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स 1,2 एंड 3,4। तो हमें पता है कि स्लोप का फॉर्मूला जो होता है वो होता है m विच इज द स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्लियरली हम अज्यूम कर लेते हैं कि x1 y1 इज इक्वल टू 1,2 एंड x2 y2 इज इक्वल टू 3,4। यहाँ पे x1 y1 और x2 y2 ऑर्डर्ड नहीं होते। आप x1 और x2 को यहाँ पे इंटरचेंज कर सकते हो, तो साथ में y1 और y2 भी इंटरचेंज हो जाएंगे। दैट मीन्स कि आप x2 y2 को 1,2 ले सकते हो और x1 y1 को 3,4 ले सकते हो। इट डजंट मेक अ डिफरेंस टू द इक्वेशन बिकॉज फाइनली वो दोनों सब्ट्रैक्ट होके नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा और आंसर सेम आएगा। ओके, सो यहाँ पे हम देख रहे हैं फिर कि m इज इक्वल टू 4 माइनस 2 अपॉन 3 minus 1, right, which is equal to nothing other than 2 by 2 which is equal to 1. So basically हमने पहला क्वेश्चन देखा, उससे हमने स्लोप निकाला था, स्लोप ऑफ द लाइन विच इज जॉइनिंग 2 पॉइंट्स विच इज 1,2 एंड 3,4। तो हमने फॉर्मूला लगाया इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x1 y1 equal to 1,2, x2 y2 equal to 3,4, which eventually gives us m is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1, which is equal to 4 minus 2 upon 3 minus 1, which is equal to 2 by 2 equal to 1, right? Okay, so next question देखते हैं। In what ratio does y-axis divide line joining 3,4 and minus 2,1? Okay, तो y-axis की इक्वेशन होती है, पहले तो हम देखेंगे y-axis की इक्वेशन क्या होती है। एक बार अप्रोक्सीमेटली ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग में देखो 3,4 कहीं यहाँ पे होगा, 3,4 कहीं यहाँ पे होगा, माइनस 2,1 कहीं यहाँ पे होगा। तो ऐसे अप्रॉक्सीमेटली y एक्सिस कट कर रही है। इसकी इक्वेशन होगी 0, अल्फा, ये है 3,4 और ये है माइनस 2,1। ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है इफ अ पॉइंट इज डिवाइडिंग अ लाइन इन द रेशियो m:n, if a point is dividing a line joining the 2 points in m:n, then the coordinates of the point alpha comma beta joining the points x1 y1 and x2 y2 are given by alpha equal to n x1 plus m x2 upon m plus n, right? And similarly beta equal to n y1 plus m y2 upon m plus n, right? So here we have this point 0, alpha, which is dividing the points minus 2,1 and 3,4. So eventually we will see that we know the coordinate of alpha. Let us assume we have to find the ratio m:n. So let us assume the ratio to be m:n at the very first place. So we know the x coordinate of the point, which is alpha is equal to 0, x1 is equal to minus 2 and x1 equal to 3, right? So m:n, so alpha which is equal to 0, which is equal to 3m m:n, 3 times m minus plus minus 2 times n upon m plus n, right? So we have this equation. Now we have to find m upon n. We have to find the ratio m:n, right? Okay, so we have multiplying the both sides by m plus n, we get 3m equal to 2n. This implies m upon n is equal to 2:3. Okay, this gives us the result that the point on the y-axis which cuts the line joining the points minus 2, 1 and 3, 4 divides this line segment
in the ratio 2:3. Okay, so let's move on to the next question. Next question says that determine k so that 2x plus y equal to beta and 5x minus ky plus alpha equal to 0 are perpendicular lines, right? Okay, so कैसे करेंगे? हमारे पास वेरिएबल्स कुछ ज़्यादा ही है इसमें, अल्फा बीटा के। तो सिंपल सी बात है, जो एंगल बिटवीन द लाइंस होता है, ये प्रॉपर्टी होती है स्ट्रेट लाइंस की। एंगल बिटवीन द लाइंस इज इंडिपेंडेंट अपॉन द कांस्टेंट टर्म apart from the terms which are the coefficients of x and y, that is the constant term. So alpha and beta would not change the angle between the two lines, right? So alpha beta अगर वेरी भी कर रहे होंगे, तुम कुछ भी assume कर लो, तो angle between the lines 2x plus y and 5x minus ky would not change. It is only dependent upon one variable, which is k, right? Okay, so we know the formula. Tan theta is equal to m1 minus m2 mod upon 1 plus m1 m2. This is the angle between, this is where theta is the angle between the lines. And m1 and m2 are the slopes of the individual lines, right? So since we have to find such that the lines are perpendicular, we have tan theta equal to tan 90, and tan 90 is equal to infinity. This implies 1 plus m1 m2 equal to 0, giving us m1 m2 equal to minus 1, right? Okay, so here we have to find m1 and m2 and multiply them to give minus 1. Okay, here clearly we, in a line ax plus by equal to c, the slope of the line is given by the term minus a by b is equal to m. Okay, so here in 2x plus y equal to beta, the slope of the line in 2x plus y equal to beta, m is equal to 2 upon minus 1, which is equal to minus 2, right? So you can see in the equation 2x plus y equal to beta, the slope of the line is minus 2. Okay, and the next equation is 5x minus ky plus alpha equal to 0, right? Here m is equal to minus 5 upon minus k, which is nothing but 5 by k. Okay, now we'll talk about the property that we discussed earlier, which says that 1 plus m1 m2 equal to 0 or m1 m2 equal to minus 1. m1 is minus 2 and m2 is 5 by k, right? Which gives us minus 2 into 5 by k equal to minus 1, yielding us k equal to nothing but 10. K equal to 10. Okay, so we started with very basic questions. First of all, we tried to find out the slope of the lines, then we tried to find out basically the division formula which divides where a point divides a line in the ratio m is to n, and then we have decided to find the angle between two lines. Using this formula we can find angle between any two lines. Here the special case of 90 degree was given to us, which is a very special case. So it is, I would recommend you all guys to remember this. When the angle between the two lines is 90 degree, then product of the slopes of individual lines gives us minus 1. This is a very important formula. It will be very helpful for you to remember this formula. Okay, and thus we solve these easy questions which are very basic, and hence we are introduced to straight lines.